लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आविर्बभूव कलशं दधदर्ण वाद्यः पीयूषपूर्ण ममरात्वकृते सुराणां रोगजालजीर्ण जनता जनितः प्रशंसो धन्वन्तरिच भगवान् भविकाय भूयात्। श्री धन्वन्तराय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार, स्वागतम। वेलकम टू ऑल डिग्निटरीज। वेलकम Dr. V.K. Agnihotri sir, Dr. O.P. Gupta sir from Assam, वैद्य तपन कुमार जी स्वागतम, चंदन कुमार वर्मन जी, आदरणीय विष्णुप्रिया दास जी, इंदौर से अखिलेश भार्गव जी, और हमारे अपने मॉडरेटर डॉक्टर जयेश ठक्कर जी फ्रॉम कोलकाता। I would like to welcome you all, and today is our journey 293rd webinar. With your blessings, cooperation, guidance, everything without which it was not possible to reach at that level, at this 293rd milestone. I am really grateful to you all who have made this journey possible. And now, tomorrow we have a gala program on 26th January from 5 p.m. to Hari Ichha. I don't know, 15 singers and poets have been invited of national level. We have invited them to present patriotism, देशभक्ति के गाने, देशभक्ति की कविताएं, देशभक्ति का इतिहास, थोड़ा थोड़ा सभी एक समन्वयक रूप में रहेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कल जरूर जुड़े। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर वैद्य चंद्र भूषण झा जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर, स्वागतम। Now I would like to request today our first speaker, my elder brother Tapan Kumar ji. Tapan Kumar ji has no need to introduce. He is the dignitary in Ayurveda. He has basic unique concepts, as he was communicating with me, really unique concepts in tourism. And
He is associated with Ma Anantanand since 1991, which indicates his social temperament, his sattvic prakriti, everything. He has started the training of Ayurveda in the feet of Sadguru. During these 25 plus years, he have learnt a lot, resolved the ego a lot, and enjoyed the bliss of assisting Sadguru. Means Hello. he is the basic force, basic energy in that ashram for health and well-being of patients and person. I would like to invite वैद्य तपन कुमार जी, मेरे बड़े भाई, आपका सादर स्वागत है. वेलकम. छोटे, तुमने अननेसेसरी मेरे बारे में बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें बता दी. एक्चुअली आज का टॉपिक ही इतना अननोन टू आयुर्वेदा फील्ड है, तो मेरे लिए भी ऐसी टॉपिक पर बोलना थोड़ा चैलेंज, लेकिन खतरों से खेलने का तो शौक पहले से पाल रखा है, आपके दोस्त जो ठहरे. तो कहने का मतलब ये है कि ये टूरिज्म है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. डे वन जब से चरक संहिता या तो संहिता काल शुरू हुआ, तब से आज तक टूरिज्म हैव बेनिफिटेड आयुर्वेदा like anything. Initially, basically, Charak Sanhitakar, Muni himself was a very big tourist, rather first medical tourist who traveled throughout the Himalayan range, right from Kanishk to Uttarakhand Charak Danda. This is 2 limits of Charak's built, I must say. POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक कनीसापुर करके जगह है जो कनिष्क के साथ जुड़ती है, और कनिष्क के राज्य पुरोहित चरक महर्षि चरक थे, और दूसरी ओर चरक डांडा उत्तराखंड में है, कोट द्वार देहरादून के ऊपर. अगर इन दोनों के बीच का एरिया देखा जाए तो वो 996 किलोमीटर का है. इस एरिया में चरक पूरी संहिता का जो भी वर्णन है वो इस एरिया के बेल्ट में पूरा वर्णन है, और इस एरिया के जितने भी आइडेंटिफाइबल पॉइंट्स हैं जिसको टूरिज्म या तीर्थ यात्रा हम बोलते हैं, वो सब हमारे लिए एक मेडिकल टूरिज्म, आयुर्वेदिक मेडिकल टूरिज्म के तौर पे एक ये पीओ के थोड़े टाइम में अपने पास आ जाएगा. तो कनिसापुर से एक ट्रेन चलेगी और चरक डांडा तक जाएगी, और बीच में पंचनदपुर आएगा, काम्पिल्य राजधानी आएगा, बहुत सारी संहिताकालीन स्थान विशेष, वो कौन सा एक नगर है उसका भी, ये सभी नगर इसी बेल्ट में आते हैं, और इसी बेल्ट की एक ट्रेन चलेगी थोड़े दिनों में, जो पूरा आयुर्वेद का टूरिज्म, वैद्यों के लिए एक बहुत बड़ी टूर या तीर्थ यात्रा होगी. एक ये तो एस्पेक्ट हुआ वैद्यों के टूरिज्म का. दूसरा जो एस्पेक्ट आजकल बहुत फेमस है वो है कि आदमी टूर कब करता है. किसी का जॉब के लिए अप डाउन करना, या किसी का कहीं बिजनेस के लिए कहीं जाना, वो टूर नहीं होती. या तो किसी को बीमार हो गया और किसी जगह पर गया, वो भी टूर नहीं होती. टूर वो होती है जिसमें आदमी अपना रिलैक्सेशन खोजता है, अपनी सेहत को और मजबूत बनाना चाहता है. ऐसा भी नहीं वो सेहतमंद नहीं होता, उसके समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक्रिय होते हैं. सिर्फ जो प्रसन्न आत्मेंद्रिय चाहिए वो उसको जितना चाहिए उतना नहीं होता. उस वक्त वो टूर की बात सोचता है. और
खीसे में अच्छे खासे पैसे हो, तब पत्नी बच्चे या फैमिली के साथ वो टूर करने की सोचता है। अब ऐसे में आयुर्वेद उसको क्या मदद करेगा? मीन्स जो आयुर्वेद का दो उद्देश्य है, एक स्वास्थ्य रक्षण और आतुर परिरक्षा। तो आतुर परिरक्षा तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स सब लोग करते हैं, रिजॉर्ट्स भी करते हैं, लेकिन जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहां पर जो टूरिस्ट आए हैं या तो जो आदमी प्रसन्नात्मेंद्रिय होने के लिए अपनी फैमिली के साथ इकट्ठा हुआ है, वहां पर आयुर्वेद उसको क्या हेल्प कर सकता है? ये हेल्थ टूरिज्म आयुर्वेद के हिसाब से बहुत कॉमनली समझा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी टूर पर निकला हो, उस वक्त कोई अंग्रेजी डॉक्टर आके उसके बोले कि चल तेरे को एक स्टेरॉइड का शॉट दे देता हूं, तेरी पूरी टूर अच्छी रहेगी, तो मैं नहीं मानता कि कोई आयुर्वेदिक या कोई भारतीय उसको लेने के लिए तैयार होगा। या चल एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं, nobody will allow even an medico to offer him steroid or antibiotic. But in that same way, in the same situation, if a Vaidya comes to him and says कि चलिए साहब आपको मालिश करके देते हैं, आपका अभ्यंग करते हैं, आपको नस्य करेंगे, आपकी शिरोपिचु करेंगे, शिरोभ्यंग करेंगे, और आपका पादतल अभ्यंग करेंगे, आपको एकदम रिलैक्स कर देंगे, आपको बहुत फ्री फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, प्रसन्न कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि कोई भी भारतीय किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर इमीडिएटली तैयार हो जाएगा। ये आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन और आयुर्वेद की बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है। एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, सिर्फ इंडिया का एक को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी भी नागरिक को अगर आयुर्वेद का वैद्य आके ऐसे ऑफर करता है, तो ही ऑलवेज विल थिंक, इवन इफ ही इज विथ हिज फैमिली एट ए अननोन टूरिस्ट प्लेस. This is the privilege of Ayurvedic physicians. And what exactly I want to postulate at this point is that हम सबको इकट्ठा होके इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें वैद्य बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और जो भी टूरिस्ट हैं उनको बहुत मदद रूप हो सकते हैं इसमें। ये और ये ऐसी बात है कि आम आदमी ये करते भी हैं। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में या टूरिस्ट प्लेस पर जाओगे तो वहां कोई ना कोई आपको मिलेगा कि हाँ, आपको ये स्पेशल रूम सर्विस तक देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो क्वैक्स होते हैं, एक्चुअल ट्रेन्ड क्वालिफाइड वैद्यस नहीं होते। जब अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एक छोटा सा ओरिएंटेशन करके दे, जिसमें अभ्यंग है, पादतल अभ्यंग है, शिरो अभ्यंग है, कर्ण वेदन है, पाद तल हृदय मर्म अभ्यंग है, प्राण प्रत्यागमन, प्राणाभिसरण, ऐसे जो भी उपक्रम हैं आयुर्वेद के, उसको अगर सिखा दिया जाए प्रॉपरली, तो उसके साथ ये सद्य प्राण कर, सद्य उत्साहवर्धन, सद्य बल, सद्य रसायन, सद्य आप्यायन, ये सब जो आयुर्वेद के उपक्रम या टॉपिक्स है, उसको हमें सबसे ज्यादा हाईलाइट और उसको डिफाइन करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। तो एक नई ब्रांच खुलेगी मेडिकल आयुष टूरिज्म की, और आयुष टूरिज्म फिर हर एक तीर्थ क्षेत्र, हर एक टूरिस्ट प्लेस पर
एक नई जगह बनेगी और एक वैद्य को वहां जॉब मिल सकती। और इस तरह से वैद्यों के लिए टूरिज्म एक जॉब अपॉर्चुनिटी और मेडिकल टूरिज्म जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकती है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए और इसके लिए हम वो क्या बोलते हैं, हर एक स्थान के हिसाब से अलग अलग टूरिज्म होगा। अगर डेजर्ट सफारी है तो उसमें आप स्वेदन तो नहीं कह सकते, और अगर हिमालयन एक्सपीडिशन है तो वहां स्वेदोपग सूप, स्वेदोपग यवागु या ये सब प्रिपेयर्ड तैयार करके उसके पैकेट्स भी मैगी की तरह बनाया जा सकते हैं। मैंने खुद ने जब जाना था तब इस तरह के क्षीर पाक को, रसोन क्षीर पाक है, अश्वगंधा क्षीर पाक है, शतावरी क्षीर पाक के, उसके ऐसे स्प्रे डाइड पाउडर्स इकट्ठे करके उसका पैकेट्स बना के ले गया था चार धाम यात्रा की जब, और वो बहुत काम के आए। कस्तूरी भैरव ले गया था, या तो सीतोपल आदि की कैंडी बना के ले गया था। ये सब चीजें उधर बहुत काम लगती है। कस्तूरी भैरव अगर एक कैप्सूल हर रोज लिए जाए, चार धाम यात्रा जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है, वो दौरान अगर एक कैप्सूल कस्तूरी भैरव की ली जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल, कितनी भी ठंडी, कितनी भी हाइट। यमुनोत्री में मुझे हाइट का प्रॉब्लम हो गया था और मैं डॉक्टर था, दूसरे सब मेरे कलीग्स थे, उनमें से कोई डॉक्टर नहीं था, सब मेरे पर भरोसे पर थे। मैं खुद ही हाँफने शुरू हो गया ऑल्टीट्यूड के कारण। उस वक्त ये इमीडिएटली मेरे को कस्तूरी भैरव ने बहुत फायदा किया, और ठंड के कारण भी वो प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद मैंने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करके जब केदारनाथ से वापस आया जोशीमठ, और वहां एक और कैप्सूल ले ली, और तुरंत मेरी एपिस्टेक्सिस क्या बोलते हैं, नासा की तरह पिच शुरू हो गया। इसलिए ये सही में काम भी करती है और ध्यान न रखो तो परेशान भी करती। इतनी इफेक्टिव चीजें हम हमारे पास संजोए हुए हैं, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करनी चाहिए। अभी मैं शुंठी और गुड़, उसके लड्डू घी में बना के हमेशा साथ में रखता हूँ टूर में, पर वो धातु आप्यायन, अग्निदीपन, पाचन और बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसे सब प्रोडक्ट्स और ऐसे सब उपक्रम ये अगर हम हर एक तीर्थ क्षेत्र या तो टूरिस्ट प्लेस में आयुष टूरिज्म के नाम पर शुरू करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। C2C करके एक प्रोजेक्ट मैंने कुछ सालों पहले किया था, 10-12 साल, कॉलगेट टू कॉन्डोम। C2C, बंदा उठता है सबसे पहले कॉलगेट चाहिए, मीन्स टूथपेस्ट चाहिए, और रात को सोता है तब विवाह के लिए कॉन्डोम। तो इस तरह से हमारे पास 36 टाइप की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो हम टूरिस्ट प्लेस पर आराम से आयुर्वेद के नाम से प्रमोट कर सकते हैं, और उससे बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी, आयुष का प्रमोशन, वैद्यों का प्रमोशन, डेप्यूटेशन, और किसी भी तरह वैद्यों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नया रोजगार, नया काम, नया एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। मैंने ऐसे 36 अलग प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे और वो एक कंपनी बहुत अच्छा चलाती थी, और फिर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर बंद कर दिया। अभी तो मैं दूसरे कामों में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये मेडिकल टूरिज्म इस तरह से हमें पूरे भारत में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उसमें तो जरूर करें, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या
कोई भी सिख, ईसाई, बौद्ध, एनी डेम, वो सभी जगह पर टूरिस्ट को तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन रखना ही होता है, उसके लिए ही वो निकला है। और उसके लिए उसके पास काफी अच्छी सरप्लस धनराशि भी होती है। तो वो धनराशि के कारण उसको वो अपने स्पेशल प्राइस को अफोर्ड करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसलिए हमें उस जगह को जब से सबसे ज्यादा हाईलाइट करके उस पर काम करना चाहिए। अभी मैंने एक लेटेस्ट मेरा अनुभव बताता हूँ। ये जितने भी पर्वतारोहक होते हैं, माउंटेनियर्स, वो सभी को मैंने महानारायण तेल का लोशन बना के दिया था। हमारे यहाँ माउंट आबू है, वहां के 100 से ऊपर कुछ पर्वतारोहक थे, और सभी ने उसको माउंटेनियरिंग के पहले इस्तेमाल किया, तो उनके परफॉर्मेंस में कुछ 7.5% का फर्क, इंप्रूवमेंट, इजाफा उन्होंने नोट किया। तो वो लोग बड़े खुश हुए कि सिंपल आयुर्वेदिक लोशन से इतना फायदा। अब आप महानारायण तेल लगाने का बोलेंगे तो वो तो कपड़ा खराब करेंगे, उस पर धूल चिपकेगी, और वो कन्वीनियंट भी नहीं होता, उसकी गंध भी अच्छी नहीं होती। लेकिन लोशन दो तो उसका पेनिट्रेशन अच्छा रहता है, उसकी गंध खराब नहीं होती, और सुगंध ऐड कर सकते हैं, और वो कपड़े भी खराब नहीं करते। तो ये सब फायदे के साथ मैंने ये पर्वतारोहक को मैंने दिया था। तो ये आयुष टूरिज्म इस तरह से हम बहुत अच्छा, हमारे माउंट आबू में ज्योतिषमती का बहुत ही ज्यादा प्रचलन चलता है गुजरात में। तो इस तरह से हम हर एक माउंट, या तो ऐसी शक्तिपीठ है, या तो कहीं भी टूरिस्ट के प्लेसेस है, वो सभी जगह पर हम आयुष के इस तरह के टूरिज्म के एंटरप्रेन्योर्स, वैद्यों को वहां डेप्यूट कर सकते हैं, और लोग आराम से जो पैसा अहमदाबाद जैसे कॉस्मोपॉलिटन में, या बम्बई या कोलकाता जैसे कॉस्मोपॉलिटन में देंगे, उससे ज्यादा पैसा वहां वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो वैद्य के लिए, आयुष के लिए, और उसके एंड यूजर मीन्स कंज्यूमर या तो टूरिस्ट, सभी के लिए बड़े उत्साहजनक रहते हैं। अभी इस तरह से हम टूरिज्म को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट हुआ टूरिज्म में आयुर्वेद। एक दूसरा एस्पेक्ट उल्टा है, व्यतिरेक, कि आयुर्वेद में टूरिज्म मीन्स जहां जहां भी आयुर्वेद के एस्टेब्लिश्ड सेंटर्स है और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, वहां पर टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए। आजकल जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वो सब पैकेजेस के रूप में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि खास आजकल मेडिकल टूरिज्म में ये TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट के पैकेजेस बहुत ही फेमस है। और आदमी परदेश से यहाँ आते हैं तो उसकी आने जाने की टिकट, यहाँ का स्टे, सर्जरी, और यहाँ का पूरा साइट सीइंग, और एक छोटी सी टूर, ये सब सेट करके वापस उसको अपने घर तक पहुंचाने का पैकेज बनता है। और ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ, और उसका बहुत लोग बहुत फायदा लेते हैं। ये ऐसे पैकेजेस पहले अमेरिका में बहुत थे, लेकिन 7-11 के बाद वो सब, जितने भी मिडिल ईस्ट का ड्रेनेज था, वो अभी इंडिया की ओर डाइवर्ट हो गया है। और ऐसी स्थिति में हम बहुत लेट हो जा रहे हैं। अगर आयुर्वेद के ऐसे पैकेजेस बनाए जाए, जहां सेंटर ऑफ जैसे श्रीधरम है, वहां नेत्र का है, BHU में क्षारसूत्र का है, मेरी हॉस्पिटल में कैंसर का है, पूना वागोली में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी मैं 2-4 दिन पहले था, वहां भी बहुत अच्छा पंचकर्म का है,
साउथ तो पूरा केरला तो जाना माना है ही है। तो इस तरह से ऐसे जो पॉइंट्स या तो ऐसे सेंटर्स है जहां हम आराम से पंचकर्म या किसी डिजीज पर्टिकुलर के पैकेजेस बना सकते हैं। हम हमारे यहाँ कोटि प्रवेशी के या त्रिगर्भा कुटी के भी प्रयोग के पैकेजेस बना सकते हैं, जिसमें वॉलेंटियर्स को भी लिया जा सकता है और उनको 21 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का ऐसा पैकेज कर सकते हैं। मैं जहां काम करता हूं वहां SJVP होलिस्टिक हॉस्पिटल है, उसमें हम वेलनेस के नाम से ऐसे पैकेजेस बना के एक्सप्लोर करते हैं, जहां ग्रुप्स पूरे बुक करते हैं और उनको 3 दिन या 7 दिन का पैकेज देते हैं। कोई तो एक एक दिन के लिए भी आते हैं, उनको सिर्फ दिनचर्या सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अलग अलग दिनचर्या के उपक्रम करा देते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल है, इसलिए गाय है, यज्ञ है, संहिताएं हैं, पारायण है, ये सब चलता रहता है, तो उसके साथ उसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से एक आयुर्वेदिक दिनचर्या को वेलनेस के रूप में, और वेलनेस के प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं हर जगह पर, उसके साथ उसको जोड़ के उसको एक पैकेज देते हैं, एंड दैट इज वेरी पॉपुलर ओवर हियर इन अहमदाबाद. People come from different corners of the society. They come with their friend groups. They consider it to be as a medical picnic. अभी जो मेडिकल टूरिज्म है उसको, अभी आयुष टूरिज्म को तो पिकनिक के तौर पे ही, पिकनिक के लेवल पर ही उसको चलाया जाता है। वमन का शिविर करो, विरेचन का शिविर करो, बस्ती का शिविर करो, न्यावरा का शिविर करो, अब शिरोधारा का शिविर करो, या तो कैंप्स करो, या तो इस तरह से भी हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर विकार प्रशमन के लिए कैंप्स और जो करते हैं वो एक प्रिमिटिव लेवल का टूरिज्म ही है। उसी को अगर हम एरिस्टोक्रेटिक, थोड़ा लग्जूरियस, उसमें लग्जरी ऐड कर दे, उसमें कंफर्ट ऐड कर दे, उसमें एरिस्टोक्रेसी ऐड कर दे, तो यही सब चीजें जो हम रूटीनली करते आए हैं, उसी को हम टूरिज्म के तौर पे एक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात कैंसर में, जिस पर सबसे ज्यादा काम करता आया हूं, अभी मैंने अमृत कर्म करके पंचकर्म के डिफरेंट पंचकर्म एक साथ एक ही पेशेंट पर एक ही दिन में करना और ऐसा 21 डेज तक करना, ये कॉन्सेप्ट को लेके अमृत कर्म नाम का एक पैकेज डेवलप किया है, जो हर एक कैंसर के पेशेंट, कैंसर तो ठीक होता नहीं, लेकिन जिस आशय का कैंसर हो, वो सिवाय की सभी धातुएं, आशय, कलाएं, उसको तो हम मजबूत कर सकते हैं, उसका तो रसायन कर सकते हैं, उसका तो आप्यायन कर सकते हैं, और उससे पेशेंट को बहुत फायदा होता है। ये कॉन्सेप्ट से मैंने अमृत कर्म नाम का पैकेज डेवलप किया है। कुछ 400-500 पेशेंट्स पर मैंने ट्राई किया है, लेकिन अभी तो कम ही है, ज्यादा होने चाहिए, होंगे। अब मैं उस पर विगरसली काम करना चाहता हूं, लेकिन जो इफेक्ट है या जो फायदा है, कैंसर तो ठीक होते नहीं, लेकिन कैंसर के पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं। ये मेडिकल टूरिज्म, और इसी को हम सबसे ज्यादा हाईलाइट भी करते हैं, और दूर दूर से इसके लिए स्पेशली ओवरसीज से भी, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, सिंगापुर से, हर जगह से कैंसर के पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, एंड वी आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट डेवलपिंग आवर इंस्टीट्यूट एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर एंड वेलनेस टूरिज्म। इस दिशा में हम काफी आगे काम कर रहे हैं, और मेरा जो अनुभव है, ये रसायन या तो कैंसर के पेशेंट के धातुओं का आप्यायन, 2 दिन शोधन और 1 दिन बलादान, ऐसा करके 2 दिन अनुवासन, आस्थापन और 1 दिन अनुवासन,
ऐसा करके रस के लिए, रक्त के लिए, मांस के लिए, मेद के लिए, ऐसे करके 7 दिन, सब 21 दिन सभी धातुओं का आप्यायन कर देते हैं। उससे पेशेंट की बाकी की धातुएं जो क्षीण हो गई होती है, या तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के कारण जल के रुक्ष हो गया हुआ होता है, वो उसका देह एकदम प्रीणन, आप्यायित और ब्रूहण वाला हो जाता है, और उसकी वो जो प्राणेषणा खत्म की गई हुई होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती। उसके साथ 21 दिन तक वो यज्ञ भी करता है, गो पूजन करता है, आचार्य पूजन करता है, पारायण करता है, वेद गान सुनता है। ये सब भारतीय संस्कृति वाला जो आयुर्वेद को बैकअप में मिलता है। योग भी मेरे साथ है, योग के एक्सपर्ट्स हैं तो वो योग भी कराते हैं, मेडिटेशन भी करता है। वो सब मिला के पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। ये कमर्शियल या स्वास्थ्य रक्षण नहीं, आतुर विकार प्रशमन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें टूरिज्म, उसके पैकेज टूरिज्म को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा अनुभव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस तरह से स्वास्थ्य रक्षण के प्रोडक्ट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स, दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्थानचर्या, देशचर्या, ये सब को ध्यान में लेते हुए हमको डिजाइन करना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेस पर आयुर्वेद को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे वैद्यों को वहां एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से काम करने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो उसको हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फैसिलिटी वाला, पंचकर्म की फैसिलिटी वाला ऐसा ओपीडी आईपीडी का कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव कॉर्पोरेट लेवल का हो, वो पुरानी दकियानुसी वाला अब नहीं चलता, अब सब एरिस्टोक्रेटिक चाहिए। और अगर ऐसा सेटअप हम डेवलप करते हैं तो वो ऐसे सेटअप को आयुष को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे पैकेजेस, आयुष के पैकेजेस बनना चाहिए जिसको आयुष एक्सपोज जहां भी होते हो, जितने भी कंट्रीज में होते हो, जैसे दुबई में है, जर्मनी में, हंगरी में, जितने भी सॉफ्ट कंट्रीज हैं जो आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहते हैं, आयुर्वेद की चेयर्स भी हैं वहाँ, वो सभी में आयुष एक्सपो में ये ऐसे पैकेजेस को हाईलाइट करने चाहिए। और ऐसे जितने भी कॉर्पोरेट टाइप के आयुष के सेंटर्स हैं उसको उसमें सम्मिलित करना चाहिए, और उनके भी पार्टिसिपेशन रख के एक प्राइवेट मींस पीपीपी के हिसाब से एक प्रोजेक्ट अच्छा किया जा सकता है, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो लोगों ने प्राइवेट लेवल पर अपने बलबूते पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये सब अनुभव, अब देखिए ये कैंसर के इतने सारा पेशेंट का ये टूरिज्म पैकेज जैसा मैंने प्रयत्न किया है मेरे यहाँ सेंटर में, तो ऐसे जितने भी जहाँ के भी जो जो अनुभव हो, श्रीधर्म का आंख आंख का एक्सपीरियंस है, पूना में कुछ कैंसर पर काम करने वाले हैं, केरल में तो सब पंचकर्म का है ही है, बनारस में बीएच में ये इसका क्षार सूत्र वाला काम हो सकता है, और हिमालय में सबसे ज्यादा हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। हिमालय में जिस तरह से धर्मशाला में तिब्बतन मेडिसिन का एक्सप्लोर हो रहा है, उस तरह से आयुर्वेद का भी वहाँ अच्छा काम हो सकता है। जो भी आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ के जो कॉलेजेस हैं या तो वहाँ के जो आयुष के सेंटर्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे हम टूरिस्ट को, पेशेंट तो ठीक है, टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे एक विद्यार्थी बहुत ही होनहार हैं, उन्होंने नांगल करके पंजाब का बहुत ही शानदार एरिया है, वहां पर एक रिसोर्ट किया है। दूसरी एक बच्ची ने हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में एक बहुत अच्छा रिसोर्ट बनाया है, और वो पैकेजेस के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी कल परसों ही बात हो रही थी, नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पर भी एक 8 एकड़ का बड़ा रिसोर्ट शुरू हुआ है बनना। तो इस तरह से टूरिस्ट प्लेस पे आयुष का
आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाए और उससे वैद्यों के लिए जनरल प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस, जॉब, रिसर्च, इसके सिवा दूसरे ऐसे सेक्टर्स भी ओपन अप हो सकेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव भी होंगे, उसमें अच्छी रेवेन्यू जनरेट होगी, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। और इससे, और भारतीय संस्कृति तो है ही है, वो तो सपोर्ट आजकल की सरकार कर भी रही है, वो भारतीय संस्कृति। तो इस तरह से चारों ओर से अभी मैं समझता हूँ लोहा गर्म है। पवन जी, ये लोहा गर्म हो उस वक्त हथौड़ा मार के इसका फायदा ले लेना चाहिए। एंड लास्टली बट नॉट लिस्ट, कोरोना ने हमको एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि कोरोना के कारण हर एक पैथी एक लाइन पर आ गई है। आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचर क्योर, कोई भी हो, कोई सब लोग एक लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं। अब जो ताकत लगाएगा वो सक्सेसफुल माना जाएगा। इसलिए ऐसे में अब ऑल्टरनेटिव, या तो चलो भाई बहुत हो गया, कोरोना में तो कुछ नहीं होता, इतना खर्च होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इससे तो अच्छा था आयुर्वेद को कुछ कर लेते, देसी कर लेते। तो अब लोगों का श्रद्धा तो पहले थी, लेकिन वो डगमगाई हुई थी, वो अब दोबारा पुनर्जागृत हो चुकी है। ऐसे में अब वैद्यों का ही बड़ा रोल है कि वो जोर मारे, आगे निकले, ऐसे नए नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करे, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे और अपना नाम, अपना क्षेत्र का नाम, आयुष का नाम और सभी की सुखाकारी उसमें बढ़े। वैद्य वैद्याः समृद्धाः भवन्तु, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको परस्परेण भावयन्तः नहीं, प्रॉस्परेण भावयन्तः, ये आजकल 2021 का 22 का नया सूत्र होना चाहिए। चतुष्पाद भी भिषक द्रव्याणि उपस्थाता, वो द्रव्य है, वो औषध न होते हुए ये होना चाहिए। द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसमें जो द्रविणम है ना, वो द्रव्य होना चाहिए। उसी की चरक संहिताकार ने लिखा है, बहुता, बहुत द्रव्य द्रवी होना चाहिए। योग्यत्वम एक नंबर का होना चाहिए। अनेक विध कल्पना, क्या चेक दो, कैश दो, पेटीएम करो, जीपे करो, अनेक विध कल्पना। संपत्ति चतुष्कोयम, ये चार गुण द्रव्य के हैं और आजकल वो द्रव्य इसको ही मानते हैं। मानना चाहिए और यही सिखाना भी चाहिए, सीखना चाहिए। तो ही वो हमारे जमाने का एक गीत में आता था, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। तो अब हमको पैसे वाले शेर बनना है। शेर तो हम अमृतस्य वै पुत्राः, हम तो शेर है ही बाय डिफॉल्ट, स्वयमेव मृगेंद्र है। लेकिन अब हमें जो हम भूल चुके हैं उसको फिर याद करके, फिर शेर बन के इस देश पर इस देश की हेल्थ को संभालना है, संजोना है और आगे बढ़ना है। आप सब लोगों ने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे वो मेरे को बड़ा भाई बोलते हैं, मैं तो दोस्त ही समझता हूँ, और अंचलेश जी हैं, वो हमेशा मेरे को याद करके ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोगों ने प्रेम से मेरे को सुना, इसके लिए आप सबका प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल प्रेरक शब्दों में और सभी कुछ साफ कर दिया। मैं अब आगे के मॉडरेशन के लिए मेरे छोटे भाई जयेश ठक्कर जी को आमंत्रित करता हूं। वैद्य जयेश ठक्कर जी, स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद सर। हरिओम।
और इंस्पिरेशन हम लोग को दिया। हमारे नेक्स्ट स्पीकर बिष्णुप्रिया मोहांती जी है। She has joined us from SHIRODA, Goa. Madam is professor and head in Gomantak Ayurveda Mahavidyalaya and Research Center. We are eager to listen to Madam. Dr. Bishnupriya Mohanty, Madam. Madam, can you listen to us? Yes, sir. Yes, Madam is Yes, sir. screen is being No, shared. yeah. The desk is yours. Yes. Please bless the occasion. These slides are moving, sir. Madam, we are getting the slide screen you have to open. Your book screen, please select the PPT. It's lunch Zoom meeting, so the fourth one, health tourism slide. On the top, Madam, also it's there. Next to it. Now it is come. Yes, ma'am. Now it's visible. Yes, Yeah, it is global visible. status. Visible. Sorry. Yes, ma'am. Continue. Yes, ma'am. You आप शुरू कर सकते हैं. Continue. you can see my slides. Yes, madam. Global Yes, status yes. लिखा हुआ slide Yes, है. yes. Good. We can see. Yeah. So my namaste to all the dignitaries present here, and I am thankful to the organizers giving the opportunity to share the ideas about how to understand about the health tourism and how we can go forward by not creating any collateral problems to the system of medicines, and especially the central message of Ayurveda. So when we will think to prosper about the tourism sector, and that is again for the maintenance of health and understanding the life process, then a little bit we have to travel from the historical aspect, that how the history hand over the resources or the golden signs in our hand. So what the global status share to us, that is up to last decades, we can say the sister sciences like the allopathy science, the dental, different surgical scenario are actually canvassing the traditional system of medicines or alternative system of medicines. Because why I am taking these names, because the name of Ayurveda still need to come. It is actually more famous. If we'll Google the word, most of the times we'll get like alternatives or traditionals, sometimes some desi, like this variety of terms will come. So health tourisms, wellness tourisms, most to be understood in terms of Ayurveda tourism. So today, just I was listening to the previous speaker, sir was speaking that many things he has shared, which we all are practically expecting from our inner being. We all are waiting that when these things will be prosper, because the globe, the drug market, the pharmacy, the pharmaceutical sectors are still canvassing the glory of Ayurveda itself. So even the terms or terminology are yet not come. Now, if we'll see the role towards the Asian countries, then a little bit, we are progressing. So Thailand in the first rank, and the India at the second rank. The joint commissions
of International Society, they are leading to giving this accreditations, and because of the sensation of accreditations, now we all the institutions initially has channelized, and therefore to get the permission from Ayush system of medicines, the NABH accreditation become compulsory. So all the hospitals attached to the institutions, or even the individual private sector hospitals, are also notified to be accredited under NABH, because it is the next step that not only at the institutional level, even how each and every person's any part of the globe will treat himself as a global citizen, and everybody can satisfy the Vasudhaiva Kutumbakam concept. Therefore, the globalizations not only touch to the daily needs, it touch to every aspects of human life. And of course, the tourism sector or the health tourism, the health sectors will never remain untouched to it. Now, therefore, I kept this slide that how we can differentiate the medical tourism, which is dominating on this health tourism up to today date. So, if we'll say tourisms or medical tourisms is synonymously known as health tourism too. But it is, if we'll consider like so, then it is a cheating to the system of medicine, system of Ayurveda itself. Because Ayurveda doesn't just facilitate the technological advancement what is available in our country. We are not so back to that. But the main theme of health and wellness is something else. What is may not be kept inside the domain of hospitals and doctors. Therefore, this vast concept of wellness or health has propagated through this health tourism concept. So I kept this slide separately to introduce that how it could be flourished with like a Krishna Vishwarup Darshans. Many different way the health tourism can be prospered. So health and wellness tourism indicates travel for taking rejuvenation, and that's why this term I kept as such, because this is the available terms, alternative therapies or spas, etc. So many a times through the spa, the terms of alternative therapies, the Ayurveda has marketed not into its core need of propagations. And medical tourism, as I has told, it touched to various sectors, starting from the primary need to many sophisticated surgical procedures too. So what is the different key factors role to go through the tourism side, or to link the tourism to the health or wellness with the goal of Ayurveda itself? The need and importance or utility is depending upon the combinations. We need the high quality facilities. We need the concepts should be translated without interfering the basic sense of meanings through their convincing words. And everybody expect a cost-effective management. And the currency here is somewhat easy to use, and it is also the same way, or in the other side, we can attract the tourist to a great extent. So if you think about the cost, what has I just tried to compile. As Sir has told, this is not our comfortable zone where we can speak too much with all sorts of evidence and interpretations or logical interventions. But still, I thought that at least we should compare statistically, so that it will encourage the peoples, those who are working in these sectors, or those who are busy with not only for a huge amount of nationalisms, but sometimes for the sake of roti and chawal too. So this is the big amount of money or the finance sectors कि सर अभी बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा लायन तो है ही हम, but we have to prosper by the
भावना of money itself. So पैसा का जो मर्दन भावना वो भी लगना चाहिए. So for that way, this is a big amount of finance sectors still waiting for us to upgrade ourselves or the system of Ayurvedic medicines, and that can attract much numbers of tourists to our country, and it is not only to attract the tourists but to unfold our history itself, the glory of our country. So what are the different way we can attract, or exactly up to today date, what are the different way through which these things are connected? So first attractions of foreign tourists towards our country is the climatic situations, is the geological zone where our country is situated, and the main source of all energy, that the presence of sun itself. So हम वो सूर्यवंशी है, what still today people has not able to forget. So even though it is highlighted as alternative medicines, but this system of medicines have so much amount of glory now. It is tawa garam abhi time hai, that is roti banane ke liye. So it is all the way that things is ready to compel or to ready to execute the system of medicines, not as an alternative system of medicines, but the first choice of treatment. It is all the way the peoples are frustrated about the antibiotic, the peoples are frustrated about the cost of medicines, the peoples are frustrated for the toxicity of the chemical medicines, and all are in a positions to, they really understood that the things which is going in the system of medicines itself is a world war. So this is the right time. We all Ayurvedic people should join hand togetherly and work for the Ministry of Ayush or for the subject of our Ayurved, that not only for the purpose of bone marrow transplantations or cardiac bypass surgery or eye surgery or so many big numbers of surgery, anywhere you can add here by putting surgery, that is the window why people are attracted. But now these things are saturated. Now all should be abolished with the system of Ayurveda itself, because Ayurveda have all the way connectivity, not only to stop those surgeries, it is also to, not to recreate any new diseases through such type of terms and terminology, or such type of, it is like a sharp knife behind to the sophisticated or aristocrated costly treatment served in terms of medical tourism. So we have to show those data, we have to show these those evidences through which we can claim that the Ayurveda have more potentiality than the running medical tourism. So the alternate system of medicines of this wellness tourism is something else what everybody are expecting. And if you see the scenario of the growth rate, around 30% increase in every year. So this is the chance, and just because of the COVID issue, things has just stagnated, but it is all created, or the things has created, or the positive side of COVID, we achieved many things for the system of Ayurveda. So this could be again a very big window where the real science of Ayurveda should go. My whole presentations will try to highlight that how far we capable to propagate the real concepts of Ayurveda. It is just not a massage therapy in the spa. It is just not a cleaning concept. It is like okay, it is just a purgations, giving some tablet, cleaning the GIT. It is not like so. So the whole concept of Sakha Koshta Gamanam, Koshta Sakha Gamanams, this changes
of dosas from one place to another place. Even the dosa vikruti is there, but disease cannot be established through the process of all the Sodhana procedures. So Sodhana is just not cleaning. It is the whole system activations. These all way a differentiation can be created under the name of or under the umbrella of health tourism and wellness tourism. It is not just a facilitation of the cost-effective management. It is not facilitates the soft corner or soft-spoken peoples of India. It is also, we like to glorify our golden history. So what the basic differentiation has created in the year of 2010, that this medical tourism what is going on is something else than the wellness or health tourism. So in the year 19, when WHO established and the definition of health comes, from those days, the society, the medical students, everybody just think about the physical, mental, social, and spiritual well-beings, through which we have just think like within a box. So physical well-being is of course necessary, but many times the person is not physically well, but he can be contributed to the society. So there are many different concepts of wellness, but yet to come, and the whole globe is watching to Ayurveda to listen those concepts of wellness. So Ayurveda can be a master of attractions in the tourism sectors, or the Ministry of Ayush and the Ministry of Tourism. Both had joined together to connect those things and Eka Bharata and Sreshta Bharata concepts to re-establish. So these are the different way. There are many sectors through which the wellness concept can be applied, and how it can be progressed through different window. So the first and foremost point I like to speak that India is a spiritual master, or what we say Vishwa Guru or Jagat Guru. So how we can say this statement against the global citizen? So being a Vishwa Guru, the basic concept is the concept of spirituality. So if the term spirituality, what is spirituality? Spirus. Spirus, we learn about the cockroach. There are some pairs of spirus there. So the breathing of oxygen. So breathing out or breathing in, that is oxygen. Wherever there is spirus, that is spirituality. That sense of life that we left. And in terms of spirituality, we are dragged within the concept of religion and all. And that concept of divisions in the race religions has finished us for the upgradations. That's why the yoga is India is the residence of yoga. Now, by Gautam Buddha, by Swami Vivekananda, many times this concept of yoga has unfolded in the British field, now or in the foreign land. And if now the scenario will go to check, they are highly conscious about the application of such concept of yoga. And but still, we are in an era of that time when people are conscious about spiritualism and the transformation to the next level of the life. And the same times we are also staying in the globe of commercializations. So yoga become gymnastic. It was not the exact theme why we propagate yoga into the international platform. But therefore, a careful watching on it, and we need the peoples to be treated by yama, niyama, then asana comes. So instead of by treating the peoples by the yama and niyama, we have made the yoga and kept in the tourism sectors under the international platform to accept it as a prevention of the diseases. But by the practice of yogas, without trained by the yama and niyama, we face more health issues. So these are the points also need to be highlighted. And of course, India can gain more popularity, more money as we are expecting, and we can be a cause of global peace.
that is by propagating the cultural essence of the race and religions, the concepts of spiritualism, the chanting of mantra, the meditations, how we can have a near-death experiences so that our conscious level will be expanded, and we can realize that human life is the greatest gift, and we will not use for such variety of wrong things. And that's the time yet to come through this wellness tourism or through this health tourisms. And India will be the master of teaching these things. It cannot be possible through the institutional learning of Ayurveda. It's essential to be propagated through all the way, not only through the tourisms. It is through the all the way, through the travel agency, through the tribal way of propagation, through all the way the things to be propagated. And the rapid growth actually we can see in the past decades, especially in the Asian country, and now each and every big hospitals have their facilities about the Ayurvedic management, especially for the Panchakarma treatment, and to some extent now the diet and pathya etc. has propagated many things. As I was speaking about the preparing lollipop, tea, the different variety of drinks, Yavagu Peya, now ready-made Yavagu Peya are there. So it is different value education, entrepreneurship, development. These things are still awaiting to enter into the systems of tourism and for the propagations of Ayurveda itself. Now, what are the things can wrongly influence or either to the progress or sometimes greatly influence for its wrongly influence to the subsiding its progress, or sometimes to upgrade its progress. It's need to take many things like a language, like the travelings, the sometimes we take the help of the local peoples to be trained. Sometimes the unused land. See, nowadays because of the COVID-19, many isolated area has declared as a that is like lockdown periods. So you can have a vacant, we celebrate the vacancy. So there is some holiday package. So holiday package to a lockdown area, the area where the people are not using actually. So if you like to be free from the disease, you can have a holiday to that particular area, and the online or work to home simultaneously can be actively works. So how far the initially it was a tourism. So many temple area are prosperated, and the tourism's exchange of many local things to the global markets, it was going on. And not only through this way, so the medicinal plants it is needed to be, and sometimes folklore claimed trend like Jaluka treatment or some Daho chikitsa etc. And that way the things goes on. So the health tourisms exchange those things through the travelers, and it need a legal and practical practice. That much flexibility needed to bring into that systems. Now this health tourisms now upgraded or many times demanded to be upgraded to the international platforms, and therefore opening of the health sector trade under the general agreement of trade in services, and that actually increases these sensitizations in the Asian countries. As I told, that is all the way it is possible, but most expected or awaited is that chikitsartham visodhayat. So commanding doctors are there, expert physicians are here in our country, and the only one or very essential point is that by providing a different variety of chikitsa, or what is famous as a apunarbhava suddha chikitsa, that could be a master plan to propagate the Ayurveda towards the other country. So sometimes now in our trend of Sanghita, you write the text but use the tantra yukti.
So they may take our Sangita, but to understand the Sangita, definitely they will ask us. So that variety of trend we have to keep in the tourism sector too. So I kept a data here that these are the different leading hospitals. They are connecting to the airlines and all, and that's they are making a bridge to attract the international travel agents and increasing the numbers of tourists and all. Next question comes, why it is to India? Because as repeatedly I have discussed, our sir has also told that to avail the quality medical treatment, it's because still Ayurveda, that is the Indians are not so much expert in cheating the things, and the cost is really much lower than the other country, and all this variety of treatment like cardiology and all are easily available here, and technologically they are not, these facilities are not so back here in our country. It is more or less same to the foreign country available in our country itself, and this can create a different image of our country in other foreign. And especially the important point is that the Indian doctors are very renowned in the world over. This is a great point, or it's our power through which we can keep, or we can take Ayurveda for a great extent. And here we can see the data that more than 35,000 special doctors. It is not in the medical sector. If we go to refer the space, that is NASA, all the scientists, or maximum numbers of scientists are Indian itself. So this knowledge is there. But if you think of flourishment of knowledge, there is no value by staying in India. If I'll take the same knowledge to other country, then definitely my knowledge, my share of experience, and my name itself, all will be flourished with a little amount of time. But the same things, if I speak here, people say, listen, okay, something is speaking about the Ayurveda. So this is the things to change. And even the nurses are very expert, and they work. Most important or essential point to check here, doctors or nurses, especially as I like to praise here, all Indians work with their inner sense itself. वो दिल से लेके काम करते हैं. What is actually written here in the Vaidya Guna. So, and next I like to share here, that is about the language and all. And sometimes the doctors and the hospitals here in our country, they keep some translator too, sometimes to understand the language of the foreign tourist peoples, those who are coming for some health issues. So all these facilities we get. Sometimes now we forget our language. We hesitate to speak our language. We start to speak with their language to convince, or to sometimes, we so flexible according to their need. It is because in our blood it says Atiti Deva Bhava. This has taught to us, and that's another positive point. Why we are expecting that Ayurveda can go out of all marketing strategies. So there are many marketing strategies we can see in the Kerala system of treatment. We can see in many tourist places, like I have given some examples like Mahabaleshwaram, Kerala, all these sir has told, all the pilgrim places, it is well available there. And there are some associations working with the industry. The joint agreement run togetherly to propagate the Ayurveda itself, and those things, and we or our Ayush ministry can connect to those variety of associations, and that just simple secretary level of letter can be issued, and Ayurveda can be joined togetherly with just with 5-10 days of exercise. Ayurveda can reach to every sectors. So they are doing actually non-officially, or sometimes hiring some Ayurveda physicians. They are doing for just 1 hour visit, 2,000 rupees.
So that a big amount of money privately the physicians are getting. So they are remain silent. Now ministry should take care of these things, or the official levels, the things should be channelized. And this is not only to drain the money in the right way, this is also a very important thing that the correct sense of Ayurveda will be propagated. That should be. And the leading country, USA and UK, we can say why a leading country, because we have a big bridge with USA and UK, especially in the sector of tourism. And therefore, I'll definitely say Pawan sir here that he can calculate. He was just highlighting the numbers of webinar he has planned and he has programmed. So he can calculate how many numbers of program he did with these two countries. So it itself proves that how far the wellness tourism is essential to make a bigger, strong bond with this country itself. So because they just don't wait for the long queue, and we have a good holiday facilities, and cheap or cost effective is always actively working. And this more than 180 countries are there in the friendshipness to our country for extending their hand, especially for the serve of tourism sector itself. And through Atithi Deva Bhava, Namaste portals, etc. Our country is also trying to make a connectivity to these things. And now Ayurveda to connect through this. This is the only one job we have to do, and not we have to do. The things is actually going on. Need to be somewhat more highlighted. And here I tried to keep that how all the different international bodies are active, and through NABH accreditations that and that they are now. I have actually kept one slide that so many numbers of applications are coming through the NABH accreditations, how to join with the official connectivity, or how to make an official connectivity to the JCI itself. And what are the things can help us for making a easy tourism? Repeatedly, I'm speaking about those, that the language should not be a barrier. So widely, the British colonials help us for the wide applications of English language itself. That is a very positive point. And the doctors and nurses not only works for the sake of money, they work for the sake of the understanding of karma and karma phala. They believe that if they will do a good serve to the patient, they will be served with a good result in their life. So with that understandings, the medical systems goes on. And all the translators are well available in our country, and people are may not be conscious about the family member, but highly conscious about the peoples coming from the other country. That's why Atithi Deva Bhava. And now government has also taken many steps ahead. That is how the infrastructure can be developed. Different health destinations, unused fountain area, etc. Very remote villages are connected with the government portals, and the localities are encouraged to develop with their own way through the Department of Biodiversity itself. And sometimes the foreigners are well available with the medical visa temporarily, and they can go through the wellness tourism. If we approach Ayurvedic sectors, will actively work there. That will be another good options for it. And as I have told, that all these accredited organizations are actively working to propagate or to enhance the progress of tourism itself. And now, these things I have discussed, that what are the other area, and the leading area we can see the Chennai is the leading area. Even we can take the name of Kerala. So Kerala, Chennai, Mahabalipuram, or all the pilgrim sectors are highly sensitized, or they are highly working for the tourism itself. And there are some leading hospitals who are working up to that level of accreditations.
It is not just because the tourists are available, so they are working. It is not like so. They have the well accredited infrastructures, and through which they are working for medical tourism. So our work is write a letter. So I'm just requesting all the authority present here, just put a letter to the Department of Ayush, and in connection to the Department of Tourism, or each and every these hospitals can have a branch for Ayurveda itself. And whatever we are expecting from yoga, from sports medicines, from the medicinal plant, from the Rasa Shastra and Vaisajya Kalpana, all the way, the yoga, that is the diets, all the way we can connect to these hospitals. And I try to keep some beneficiary. It is not the Ayurveda people should get benefited. The taxi driver will be benefited. The hotel people will be benefited. The airport people will be benefited. The daily car service people will be benefited. So we can imagine the whole finance, the budget, the GDP of our country will be benefited. So we should just try to work for the sector of Ayurveda. We can think about as a national movement itself. So for the sake of our country, we should work. So Ayurveda can work for all these way to increase the GDP too. And the possible challenges also to be worked on those, like when we'll proceed for the commercializations of the Ayurveda, then sometimes a hesitation comes in between doctor and patient relationships, because this is taught to us that we should not sell medicine. We should not sell our knowledge about the system of medicines. Now, it is fine, but when it is in need, or what variety of, what amount of, what should be the structure of flexibility in between the relationship of doctor and patient, that to be again a part of training. And next thing is that the people who are coming from the foreign country, sometimes their treatment is just bonded with some particular variety of policies and all, and that is strict to their own country. So how it can be applicable in our country? It is just a inter-country talking together. Then the thing can be, it can be make a bridge in between, and these problems can be solved too. So there are problem in the sense there are solutions also. So we can work togetherly on those issues, and the things can be prospered, and those challenges can be overtaken. And of course, we have to see these shortcoming. Sometimes the failure of power, because we depends upon the electricity. We can think about the solar power, etc. So that 24/7 the things can work. And here, when we'll think about the standard of industry and the hotel, the restaurant, and all, even big hospitals too, infrastructures is questionable. So we have to work those shortcomings when we are thinking as a global servicing, and this concept of privatizations and government. Eka desa, shrestha desa. If we'll work on that concepts, no privatization, no government. With the same rule, everything will be worked. So these are the different shortcomings we have to look after. And this is some example I took separately, that how Kerala is working. Kerala is a God-blessed area. So naturally, the soil systems, the rainfall, the climatic situations itself attract, and the rich heritage of traditional system of medicines itself. And those things give a name to the Kerala in the global strategies. And the availability of the rich potentiality in the alkaloids, the medicines itself. And if this is a it can, in an exchange, nearby area can be developed, and the things can be prosper. And next, as India is the birthplace of yoga, how we can think about the authentic practice of yoga itself, and the original value to be upgraded against the gym practice of yoga itself.
because yoga should not be like treated as a gym practice, because we are just thinking like so, yoga like as if a soft corner of gym. No, it's a whole transformations of the psychic, of the no, soul or atma levels of the person itself. So it is from one standard of our spiritualism, one standard of our psychology, one standard of our consciousness, how we can go to the next standard of our consciousness. That is like what we say, that is tanme manah siva sankalpamastu. These concepts to be trained through the yoga. So repositionings of yoga tourism is needed in our country, and that our goal, that is out of all religions or all the religious understandings or misbelievings, we have to train ourselves or train each and every global citizens with the real concept of yoga itself. And we can have a plan about the yoga vacation itself for our mental, spiritual, or self-developments. As I told, I always stress upon this concept that human life itself is like trapping of consciousness with शरीर and मन. हमारा शरीर और मन के अंदर जो consciousness trap हो गया है, उसी को जिंदगी कहते हैं. So the goal of life is to untrap the consciousness, is to expand those consciousness, and yoga teaches us such things. It is not just to make our physical body into a farm. Many farm body people die just because of depressions, just because of frustrations. So a good mind can be a leader. That's why that to be trained by chanting mantra, meditations, or reading religious books, etc. The self-awareness throughout the life can transform one simple person like Dasyu Ratnakara to Valmiki. So those variety of changes is necessary. So yoga to be, reconnected with different variety of IT sectors, and it to be propagated through its real essence. Similarly, we can work about on the sports tourism, Khelo India. So it is how we can train our mana by giving the training to the Sarira. And the tourism sectors can actively work on that side too. And as I discussed about the spiritual tourisms, the master of all spiritual concepts in the whole globe are there in our country. And it is in the Ashok when fight to Kalinga, and Kalinga Rani Karubaki that time taught this concept to such a furious emperor Asoka and converted into Buddha monk, who has passed this message of Buddhism to the whole country, to the whole globe. So that mastership is here in the soil of India, and those things to be propagated through the wellness tourism and the health tourism. Speciality of Ayurveda, that all the concept of medicinal plant, that to be glorified and that to be propagated. Another identity of our Ayurveda is the spices. So ये कान्हा भाई जो था जिसने स्पाइस को पहुंचाता था, जो भास्कोड़ा गामा के नाम तो कान्हा भाई ने दिया था भारत के बारे में. So the spices business man कान्हा भाई, who has actually propagated the identity of our country through the spices itself. And that is quoted in Ayurveda through this Yabagu, Peya, Panchavidha, Kasaya, Kalpana. I always put a challenge in my classes to my students. That आज 5-star, 7-star hotel में जाओ, कौन सा भी item लेके आओ, उसका basic formulation मैं चरक संगीता में निकाल के दिखाऊंगा. It is not out of our Sangita. No any items provided in that 5-star or 7-star hotels are out of our text. That's the promise. And all are just because of the rich sources of spices. Highest numbers of shloka in Charak Sangita is available in Charak Sangita Sutrasthana 27th chapter, named as Annapanyam. खाना पीना के बारे में इतना लंबा लिखा गया है
because this need a propagation through the health regimes. Health को अच्छा रखना है तो खाना को ध्यान दो. It is not the outside decorations. It is to provide a good food. So अतिथि का अच्छा सेवा करना तो उसको एक अच्छा खाना दीजिए. किसी आदमी को अगर याद रखना है उसको एक बार अच्छा से खाना दिलाओ, जिंदगी भर नहीं भूलेगा. And that's through the spices. So the tourism sectors to be developed through the spices itself. Dhupana chikitsa. So all these fumigation purposes, it is not the external fumigations, it is also through the internal fumigations through the dhumapana or dhupana chikitsa too. And what is going on abundantly during these COVID periods. There are different ways the holistic approach Ayurveda to be propagated through the wellness and health concepts of regimes. That is the Suddha Chikitsa, that is to sensitize our internal softwares. So software अगर बिगड़ जाएगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा. So the physical diseases are written initially, उसका पटकथा उस सॉफ्टवेयर में पहले लिखा जाता है. So the whole concepts of Ayurveda about the wellness is to correct the software, that is Indriya, Sattva and Atma. By correcting the software, this physical body can be corrected. So this is the message of holistic approach of Ayurveda, yet to propagate to the international platforms. And these are the different other concepts through which Ayurveda can help in the tourism sectors about the identification of Prakriti, the personality development itself, the genotype and phenotype itself, and the concept of homeostasis, the Dhatu Samyata itself, and different concepts of harmony. It is not only the harmony of the Vata Pitta Kapha, with the harmony of the society, harmony of the state and state, country and country, or the subcontinent, the continent and continent. Making a bridge. चाइना ने क्या क्या अपना एक वॉल बना लिया. वॉल बना के देश का डिवीजन करके पीस नहीं लाया जा सकता है. So the greatest salute to our country and Ayurveda is passing the message of harmony, not only dosha samyata, dhatu samyata, but the samyata in terms of santi yet to come through the tourisms and through this specially wellness concepts of tourisms. And last, my message to all the authority present here, that we started from Takshashila, Nalanda, Kashi Vishwavidyalaya, जहाँ का हवा पानी में ज्ञान, जहाँ का हवा पानी में माँ सरस्वती रहते हैं, वो देश हमारा. From that side, I like to address the citizens staying in the global citizens, that now we like to search our own identity and re-establish the identity. Except Ayurveda, this cannot be possible. So Ayurveda is the only one solution to re-establish the our heritage, to re-establish the identity of our country, to re-establish the language like Sanskrit, to re-establish the Sanatan message of Vasudhaiva Kutumbakam. It is only one answer is Ayurveda. So thank you to all of you for all of your kind listenings about these all things available in our Sanhitas and classics. If anybody have some query against my statement, please proceed. Excellent. Thank you, madam. Ji, kindly continue, Jayesh ji. Thank you, madam. Thank you, Dr. Bishnupriya, madam, for your excellent. As always, it had new ideas and new things to teach. We are really grateful to you for sharing your ideas and views. Now, moving further, we will be having Dr. Saikat Kumar Basu from Canada. Due to some reasons, sir is traveling, but sir have been kind enough to send his pre-recorded video. We will be playing the video. Dr. Saikat Basu is Executive Research Director, Performance Seed Lethbridge, Alberta, Canada. For not being able to be present for today's meeting. Dr. Sharma sir will be playing the video. May I request sir to the video that I forwarded start the presentation.
Hello, welcome friends. This is Saikat Basu, and I apologize for not being able to be present for today's meeting due to a pre-engagement that I have to attend. So hence the video that I forwarded to Dr. Sharma for circulation. Thank you so much, Dr. Sharma, to you and to your organization for your kind invitation. It has been a pleasure knowing you and working with you. Thanks, and without any delay, I would like to highlight a few points regarding tourism opportunities in India, particularly with respect to Ayurveda. I think it is now well known to everyone associated with Ayurveda or Ayurveda practices that Sri Lanka and India are one of the two top destinations in the world, even prior to the COVID situation that happened around the world, that was known for Ayurvedic treatment. The cost of medication in Western countries are going too high, and those countries which do not have a social program where your medical bills are entirely paid by the government, collected revenues through the taxes, such as Canada, Denmark, New Zealand, and other countries in Scandinavia. A vast section of people have to pay for their own medical bills, and usually that go through medical insurances, which is of varied types, varied nature, varied different kind of programs that you need to follow. And many of the time the premiums are too high and it's quite expensive. So there has been a tendency of people around the West for getting into other countries or moving into alternate system of medication for non-threatening life disease at least. Say, for example, skin-related issues, allergies, healthcare, general healthcare, cough, cold, sinusitis, stomach pain, bowels-related issues, digestion-related issues. And Ayurveda has a huge opportunity in there. In India, Kerala has made a milestone, particularly in case of Ayurvedic treatment, where the concept of Ayurvedic medical tourism has evolved over the years, and it's a leading state that's earning a significant amount of revenue through this medical tourism, particularly for Ayurvedic treatment coming for 7 days or 15 days for Panchakarma or other related aspects that are very much popular in the Western countries, but other Indian states are following up. There has been centers such as in Tamil Nadu, I'm aware, in Telangana and Karnataka that has come up, but unfortunately in West Bengal and in Eastern India there is not much opportunity for this as yet opened up as yet. But I foresee that post-COVID this is going to expand and increase, and if we can increase our infrastructure regarding this, and particularly with respect to safety and security of the tourists that are coming. One of the concerns for visiting India has been that unless they come through a proper guided channel, as they have been doing it for medical tourism, for Ayurvedic medical tourism in Kerala, sometimes you get a hold of very bad touts and agents who cheat them a lot of money, and those who are not associated with the Indian system or do not know where to know and go and knock or check or file their complaints and stuff are sometimes often landed up in water, getting into a very high challenge problem. But nonetheless, if these safety and security issues could be controlled and regulated by the government and the Ayurvedic institutes and workshops organizers who are interested in promoting such medical tourism, I think it's a huge, huge opportunity. There are wonderful sites across Northeast India and Eastern India, peaceful and with high serenity, where there is lots of solitude, and if there are centers that are open for people that could include some forms of yoga, pranayam, and Ayurvedic treatment, particularly with Panchakarma, oil-based treatments, body oil massaging. So it's a kind of an integration of all these methods that are extremely popular, and Western tourists are willing to pay a significant amount for these opportunities. But the good part of this is that it is still very cheap compared to what will be in USA, Canada, or in European Union. The amount that you will have to pay, it's way, way less in India. And then being a historic, India is a great civilization, and there
there are lots of tourist spots. So many people who come for 15 days, 7 days or 10 days, they want to dedicate towards their Ayurvedic treatment, and 5 days around, moving around, or even those who are coming for a month, 15 days of treatment and 15 days of relaxation, travel and tourism. And if there are organizations who can come up with this kind of a package where they include the travel and tourism along with this Ayurvedic treatment, not necessarily one particular organization has to do both tourism as well as the Ayurvedic treatments, but there are organizations that has to be, cooperative towards one another, coordinative towards one another, and then help the tourists to come in and travel after their post-Ayurvedic treatment. Could be a fabulous job opener for many parts of India, particularly since Eastern and Northeastern India is not much known to the tourist circuit of the international tourism other than places like Darjeeling and stuff. There is huge opportunity for entrepreneurs who wants to start these kind of programs. There are huge amount of opportunities that they should look into, and this will be an employment originator too. So I would very much suggest people to look into these opportunities and take into consideration and promote Ayurvedic tourism. Particularly countries like USA, Denmark, Germany, United Kingdom, France, Poland, some parts of Russia, which is mostly in the European section, then the newly formed Croatia, Slovakia. They are all interested in coming for treatment from Italy, and even from Japan and other countries in South Korea, Japan, Middle Eastern countries. They are also now exploring these kind of opportunities, and this medical tourism could boom while there are. Yes. Thank you, sir. Yes. Thank you for the excellent presentation. Despite sir being in sudden travel, he was kind enough to share his video. So after listening to all the speakers of the day, we really feel that there are wide scopes and there are lots of opportunities for us waiting to work in place of wellness tourism or health tourism. Now, the session will be open for discussion. We are really glad to have with us Professor V.K. Agnihotri sir, Dr. Rajendra sir, Dr. Jagdishwar sir, and Dr. Sangram Das also with us. So for further moderation, may I request our host, Dr. Pawan Kr Sharma sir, to kindly proceed. Is there any opinion, Dr. Rajendra? Dr. Rajendra ji. You are referring to me, sir? Namaskar, sir. Namaste. Actually, I am traveling. That's why I am not able. I am listening, but I am not able to talk. Hello. Yes. I am traveling. Mask lagaya hai. No problem. Better next time. Yes. I am listening. Okay. Thank you. Dr. Sangram Das. Dr. Sangram ji, would you like to add something? Vaidya Rajan Patankar ji, Swagatam. Respected Dr. Patankar Saheb. हेलो हाँ नमस्कार सर. हाँ यस अभी जरा क्लिनिक में हूँ पर फिर भी 1-2-4 बातें कहता हूँ. हाँ पूरा तो सुन नहीं पाया पर जितना भी सुनना बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशंस थे. तो हमारे साथ में काम करने वाली वैद्य उर्मिला पिटकर की जो महाराष्ट्र मुंबई से है, उसने उसका एक कोकण में घर है, वहां पे उसने एक्चुअली ऐसा वो अभी गए 2 साल से हुआ नहीं तो हर साल में 2 बार वो करती है. करीबन 15 से 20 लोग रहते हैं. उनको आयुर्वेद के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ अपना जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है,
वो सब दिखाते हैं। जो खाना उनके लिए बनाया जाता है वो भी आयुर्वेदिक माध्यम से, कि जिसमें घी का अंतर्भाव है, तुअर की दाल कम है या नॉनवेज नहीं है, ऐसा मतलब हम जिसको बोलते हैं कि सात्विक खाना, ऐसा सब दिया जाता है। उसका एक ब्रोशर भी उनको दिया जाता है और उनका फॉलोअप भी रखा जाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा, हम लोग बोलेंगे कि एक एग्जाम्पल वो कर रही है। और वैसे ही कोकण में और भी जो 2-3 वैद्य है, उन्होंने अभी अभी फिलहाल शुरू किया है। एक पंत वालावलकर जिनका नाम है, वो कुडाल के आगे उनका है, बहुत ही बड़ा घर है, तो उसमें भी उन्होंने अभी टूरिज्म, आयुर्वेदिक टूरिज्म ऐसा शुरू किया है। पूना में भी 1-2 लोग हैं, वो भी ये रेगुलर करते हैं। और इसमें एक मुझे फर्क ऐसा दिखाई दिया कि हमारी ये जो पिटकर है, वो हर एक आदमी का फॉलोअप भी रखती है हर 2-3 महीने के बाद, कि वो ये सब उसने एक पैरामीटर्स बनाए हैं कि वो सब ये लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, ऐसा देखने के लिए। तो ऐसा अगर आयुर्वेद को थ्रू टूरिज्म अगर प्रमोट किया जाएगा तो और भी सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। आपका जो काम चल रहा है उसके लिए फिर एक बार बधाई और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सब लोग कुटुंब के एडमिन बने हैं सर, आप लोग कुटुंब के एडमिन हैं। प्लीज यूज एंड कम्युनिकेट थ्रू कुटुंब। अग्निहोत्री जी, जयेश ठक्कर जी, पटनकर जी, all are admins of the कुटुंब group. So please act as admin and lead us. सुभाष शेट्टी भी जरूर। Yes. So I would like to request now okay. Professor V.K. Agnihotri ji for his valuable concluding blessings. Professor V.K. Agnihotri ji. नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। और आज के हमारे सारे उपस्थित हमारे आज के ये सभी मुख्य वक्ता जिन्होंने अपने विचार के द्वारा आज की इस वेबिनार को जो 293 भी है वो सफल बनाया। सबसे पहले तो हमने तपन सर के विचार सुने और आज एक बार पुनः उन्हें सुनने का मौका मिला। शुरू से ही उनके विचार बहुत ही उदात्त और बहुत ही विषय पर पकड़ बनाने वाले होते हैं और नवीनतम उपयोगिता से संपन्न जानकारियां और क्वेस्ट के साथ में। और उसी हिसाब से मैडम विष्णुप्रिया जी का अप्रोच रहता है। हम बुद्धिजीवियों की पता नहीं क्या योग्यता या स्पेशलिटी होती है, विषय चाहे कोई भी हो, अपने बोलने की जगह था और आधार प्राप्त कर ही लेते हैं। और इधर हमने सौकत जी का तो रिकॉर्डेड ही बात सुनी और राजेंद्र पटंकर जी के कुछ संस्मरण सुने, जो कि उन्होंने अपनी जो वैद्य उर्मिला मैडम के बारे में बताया कि कोंकण में कैसे कैसे वो आयुर्वेदिक विचारधारा को प्रैक्टिकल भोजन के रूप में और उनके अनुभव को नोट करके एक वाशर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और आयुर्वेद को बहुत दूर तक उसको प्रारूपिक क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। हमारे आज के इस वेबिनार के विषय पर हम कुछ पीछे, बहुत पीछे जाके अपने विचार रखना चाहेंगे। शायद आपको कहीं पर कुछ इसमें नवीनता लगे, आपको लगे कि ये सब कुछ आज जो बताया गया है उससे हम कितने और पीछे से और गहरे से जुड़े हुए हैं, जो भूलते रहते हैं, भूल जाते हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। वास्तविकता क्या है आप ये देखिए। आज तपन सर ने कहा कि हम प्योर उसको मानेंगे जिसमें प्रसन्नात्मेंद्रिय मना का प्राप्ति हो तो वो टूर है, और नहीं तो ऐसे ही छोटी मोटी यात्रा हो गई। तो क्या यह संभव नहीं है कि हम प्रत्येक यात्रा को टूरिज्म तक उसका प्रारूप का अपग्रेडेशन कर सके? इसके क्रम में हम बहुत पीछे जाते हैं और हम चलते हैं कि पहला टूरिस्ट कौन हुआ है, किसको हम पहला टूरिस्ट माने, किस रूप माने। क्योंकि आज की चर्चा तो अपनी वेबिनार के जरिए है। हम 27 सितंबर को जो अपना नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, तब से हम चर्चा करते हैं तो बहुत गहराई तक चलेंगे। हमारे अपनी सोच के अनुसार हमारे जो नारद जी हैं, ये नारद जी पूरे वर्ल्ड और ग्लोब से तो छोड़िए, पूरी यूनिवर्स का ग्लोबल इंटर यूनिवर्स वीजा रखते हैं और बिल्कुल उनका फ्री टूरिज्म है। और बिल्कुल सत्य है कि उनका टूरिज्म फुल ऑफ द प्रसन्नात्मेंद्रिय बना के ही
क्रम से जुड़ा रहता है। और इस रूप को हम अगर चलें आगे तो हम आयुर्वेद में प्रिवेंटिव मेडिसिन के आदमी होने के नाते प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पहले देखते हैं। हम पता नहीं क्यों आयुर्वेद को इतना छोटा समझ के भूल जाते हैं। आप देखिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के आए और भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने के लिए बात रखी, तो वो क्या था, भगवान राम और लक्ष्मण जी समस्त ऋषि मुनि और साधु संत महात्माओं के स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के लिए ही तो गए थे। वे स्वस्थ थे, अपना आयुर्वेद जी रहे थे। आयुर्वेदिक दिनचर्या, निशाचर्या, संध्याचर्या, रातचर्या, आहार, उपस्थम, ब्रह्मचर्य, सब कुछ वही तो जी रहे थे। वो तो साक्षात इनकार्नेशन इन पर्सनालिफिकेशन ऑफ आयुर्वेद ही था जो हमारे संत महात्मा जीते थे। आयुर्वेद द्वारा वहां था और उनको निर्वाध रूप से वो प्राप्त होता रहे, इसलिए भगवान राम ने ये टूरिस्ट बन के यात्रा की थी विश्वामित्र जी के साथ में। ऐसे हम लोग चलते हैं, अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग लेके चले, हमारी माता गंगा जो है वो गोमुख से लेके और आपके कलकत्ता तक वो तीर्थ यात्रा ही तो कर रही है, वो टूरिज्म ही तो है जो अपने साथ पूरे आयुर्वेद को लेके बहा रही हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड की और उनके पूरे क्षेत्र में आने वाली समस्त औषधियों का सार वो अपने साथ लेते हुए जो जो उनके तट के किनारे बसे हुए गांव क्षेत्र हैं, उन पे किनारे रहने वाले लोग उस जल को आचमन करके उससे प्राप्त होकर उससे सिंचित होने वाली हमारी समस्त भूखंड से प्राप्त होने वाले फसल, जिसको कि हर स्वस्थ व्यक्ति खाता है, उसको वो स्वास्थ्य प्रदान करते हुए कलकत्ता तक पहुंच रही है। हम दशरथ जी गए कि एक बात दशरथ मनमाई भय ग्लानि मोरे सुत नाई, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दशरथ जी के पास दशरथ जी का जाना क्या ये टूरिज्म नहीं था, जो उन्होंने दुख और सुख, अभी तपन सर कह रहे थे कि सुख भी दे, दुख सुख सुनाया कि हम हैं तो चक्रवर्ती राजा लेकिन हमारे पास सुत नहीं है। और उसके बाद इधर हमारे हनुमान जी थे, उनको भी इंटरनेशनल वीजा प्राप्त था। और जब वो कहते हैं मैनाक पर्वत प्रकट होता है उनकी लंका यात्रा के लिए, सीता की खोज के लिए, तो कहते हैं राम काज कीने मुने बिना मोहि कहा विश्राम। जब वो विश्राम की बात करते तो केवल हनुमान ते परसा पुनि कीन प्रणाम, केवल हाथ से स्पर्श कर दिया, विश्राम नहीं लिया। तो जो विश्राम की बात की, मसाज कराएंगे, नस्त देंगे, विश्राम कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या थाईलैंड में होने वाले मसाज में कहीं आयुर्वेद पैदा हो रहा है? वो तो पैसा कमा रहे हैं, उन्हें इससे आयुर्वेद से तो मतलब नहीं है। क्या डाइट है, वेज नॉन वेज कोई मतलब नहीं, वो भी मसाज कर रहे हैं। तो हमारी हर यात्रा टूरिज्म बन जाए और टूरिस्ट प्रत्येक वो यात्री टूरिस्ट बन जाए। मैं तो दावे से कहता हूँ हमारा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पूरे आयुर्वेद के छात्रों के लिए टूरिस्ट प्लेस है, वो स्पिरिचुअलिटी का देश है। सभी ने आके हमारे 300-400 वनौषधियों के बाग को देखा, वनौषधि उद्यान देखा। हमारे उत्तराखंड में प्रयास है कि जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जो मुख्यालय में जहाँ तीर्थ स्थान है वहां स्थित है तो वहीं, अन्यथा तीर्थ स्थल पर उपस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पंचकर्म इत्यादि के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर यात्री को लाभ देंगे और हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुद टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे जहां पर कि उनको जीता जागता आयुर्वेद, आयुर्वेदिक डाइट और आयुर्वेद से संसाधित जुड़ी हुई चीजों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इतने नहीं, वनौषधि का ज्ञान भी करवा रहे हैं, कहीं नक्षत्र वाटिका के रूप में, कहीं गृह वाटिका के रूप में, जो हमारे स्कूल में भी डेवलपमेंट हुआ है, गुरुकुल में डेवलपमेंट हो रहा है, मुख्यालय हरियाणा में भी कर रहे हैं। कोशिश यही है, पंजाब में बहुत कुछ हुआ, डीबी में इधर हुआ है, हर जगह इसमें नक्षत्र वाटिका और गृह वाटिका के हिसाब से जो वनौषधियों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, चाहे वो किसी वॉक ऑफ लाइफ हो, जो मिडिल ईस्ट की बात इन्होंने कही है बसु सर ने, और लोग भी जितने हमारे आए थे, केवल पहले वो स्पिरिचुअलिटी के लिए आया करते थे, बनारस में और सारनाथ जाते थे, अरविंदो आश्रम जाते थे और जगह जाते थे, वो अब उत्तराखंड में आयुर्वेद को ढूंढने के लिए आते हैं, ऋषिकेश में आयुर्वेद को ढूंढने के लिए आते हैं। स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलती है, जैसे मैडम ने कहा कि स्पिरिचुअल के साथ हम चलेंगे तो हमारा वैचारिक दृष्टिकोण आयुर्वेद स्पिरिचुअलिटी भी देता ही है, सद्वृत्ति भी देता है और साथ साथ वनौषधियों के बारे में भी बताएगा और आयुर्वेदिक वे सब संसाधन जिससे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके वो चलेगा। रही बात हम ऐसे हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे या 10,000 और उससे ऊपर क्षेत्र में, वहां तपन सर ने अच्छा बताया कि जो कस्तूरी भैरव की प्रिपरेशन है या हमारी जो और ऐसी प्रिपरेशन जिनमें की लक्ष्मी विलास इसमें की चीजें जो हमें सांस लेने में सहायक हो जाएंगी, वो सब का साथ साथ पैकेज चलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ये वागु, मंड, पेया, बिलेपी, पंचविध, कषाय, कल्पना जितनी भी है, इनके रेडीमेड प्रिपरेशन ऐसे प्रिपरेशन हाई हाइट पर, और बुरांश का शरबत और ऊंची ऊंची पहाड़ियों मिलने वाली वो सारी चीजें जो हमारे क्षेत्र की वन संपदा और वन्य संपदा के अंतर्गत हम लोगों को बराबर प्राप्त हो रही हैं, उनका बढ़ावा देते हुए
प्राकृतिक इस पृथ्वी लोक पर कलयुग में तो ये टूरिज्म है, और सत्ययुग द्वापर में जो टूरिज्म था वो हमारे माता गंगा के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में। और तो वीजा के लिए देखिए भरद्वाज जी के मन में जब वापस लौट के आ रहे हैं पुष्पक विमान में, वो तो खुशी का माहौल था, राजगद्दी प्राप्त होने वाली, भगवान जी लौट रहे हैं। तो सुग्रीव, अंगद, नील, नल, जामन, इनके वीजा को बनवाने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम में रुके थे रामचंद्र जी, तब जाके, क्योंकि जब रामचंद्र जी वहां गए, जब कोई आजा किसी देश में लड़ने जाता है उसे वीजा नहीं चाहिए होता, वो तो लड़ाई करने आ रहा है। लेकिन जब कोई आ रहा है मित्रता ग्रुप में तो उसके लिए क्लियरेंस होना चाहिए। ये सब भी बहुत बड़ा टूरिज्म था जिसको हमें ध्यान रखना होगा। हमारी सारी नदियां पूरे भारत में टूरिज्म कर रही हैं और पूरे स्वास्थ्य को लेकर चलती हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में एक विद्यार्थी के नाते मेरा जो दृष्टि है वो इस रूप से है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, और हम ऋषि पुनीत जो हमारी टूरिज्म की परंपरा है उसको बनाए रखें। आज के सभी प्रस्तुतिकरण हमारे वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई, और पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतने उच्च स्तरीय कार्यक्रम आज हमारे 293वीं वेबिनार पूरी की, और सभी हमारे श्रेष्ठ जनों को बहुत बहुत प्रणाम। ये आपकी प्रेरणा है कि मैं इतनी फास्ट स्पीड से दौड़ गया, ये आपकी प्रेरणा है, नो डाउट आपकी प्रेरणा है। और दौड़ते दौड़ते कल मैं आपसे सहयोग की और आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। जो 6-7 कवि है वो तो सब आपके पहचान के हैं। कल एक गाला प्रोग्राम है तो आप मैंने भी 30-40 जगह आपके इसको भेज दिया, जैसे लिंक आएगा सबको अपने जानने वालों भेज दिया। कल आपका कवि सम्मेलन वर्चुअल जो बहुत धुआंधार होने वाला है। जी जी। और आज आपको हमारे विचारों से कुछ स्पर्शता प्राप्त हुई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ एक नयापन होता है, बहुत ही अच्छा लगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सर। जयेश जी बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। कल एक बड़ा सेशन है, मैं नहीं जानता वो 5 बजे से शुरू होके कितने बजे खत्म होगा, लेकिन जितने बजे भी होगा हम लोग बड़े आनंद और उल्लासित होके उठेंगे, ऐसी मेरी एक आशा है। तो आपने रियली बहुत अच्छे अच्छे कवि रिकमेंड किए। किसी को 800 अवार्ड मिले हैं, किसी को 200 अवार्ड मिले हैं, मतलब वहां सेंचुरीज में अवार्ड मिले हुए हैं उनको। तो कुछ वर्चुअली कुछ चाय पानी तो हो नहीं पाएगा, वर्चुअल चाय पानी? नहीं, आप आइडिया तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये यदि इन सबके एड्रेस हो तो स्विगी से, जिनी से कुछ भिजवा दिया जाए। अरे अरे, ये सब संपन्न है, सब आपके स्नेह के आकांक्षी हैं, सभी आपके स्नेह से के भूखे हैं, वही प्राप्त हो जाएगा, बहुत है। जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो, रियली जय हो। थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं 5 बजे, जरूर मिलिएगा। जगदीश्वर जी प्रणाम। प्रणाम जगदीश्वर जी। हाँ दादा जी प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ। कैसे हैं? हाँ बाबा की कृपा से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कल जरूर जुड़िएगा, कल जरूर जुड़िएगा। जय हो।